Hello students, welcome back to our channel Gyan Manji Online Education. I hope you all are fine and safe at your home. So students, today onwards we are moving with our next grammatical topic, and that is tenses. And in the tenses we are moving with continuous tense. Okay, so here we have the video, so kindly watch it very carefully. Continuous tenses. I have some free time right now. Can we play badminton? I play badminton every day. But right now, I do my homework. Do you mean you are doing your homework right now? When Shruti says, I play badminton every day, it means that she does this activity daily. But when she says, but right now I do my homework, it does not mean that this is a daily activity. So here, but right now I do my homework. अभी मैं मेरा काम कर रही हूँ, वैसा हम लोग बोलते हैं. So instead of using do, we have to use I am doing, right? So वो इंडिकेट कर रहा है कि अभी मैं मेरा होमवर्क कर रही हूँ, और एक्चुअली शी इज डूइंग हर होमवर्क. सो आई डू उसने जो यूज किया है वो गलत है. For Shruti has not spoken correctly. What Shruti should have said was, but right now I am doing my homework. This helps Meeta understand that Shruti is doing her homework right now and that she won't be able to play badminton with Meeta till her homework is completed. So, the way we use verbs in a sentence tells us when the action takes place and the status of the action. Let us understand this better. So the way we use verbs in a sentence, जब हम लोग सेंटेंस में जो वर्ब यूज करते हैं, जिस तरह से यूज करते हैं, वो क्या शो करता है in a sentence tells us when the action takes place and the status of the action. तो वो action कब happen हुई और कहाँ पे हुई वो indicate करता है. तो हमें verb बहुत carefully use करने हैं according to the tense. We have already learnt about how all verbs can be written in three tenses: past, present and future. The tense you choose shows when an action takes place. These tenses have different forms. They show us the status of an action at a given point in time, whether the action has been completed or is ongoing. We have learnt the simple form. For example, I walked to school, I walked to school, I will walk to school. Now, let's learn about the... So it's all about the simple tenses, students. So in simple tenses, I walked in past, I walked to school in simple present, and I will walk to school, that is our simple future tense. Okay, so there is not am, is, are, was, were in past and present. जब verb आता है, देखो सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में क्या आता है कि जब एक्शन प्लेस होती है, एक्शन परफॉर्म हो रही है, तो हम लोग वर्ब का ही यूज करेंगे. एम इज आर प्लस वर्ब ऐसा कभी नहीं आएगा सिंपल टेंस में. और सिंपल पास्ट में वॉज वेर प्लस वी का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऐसा कभी नहीं आएगा. ओके, तो वो स्ट्रेटेजी सिंपल में है. फ्यूचर में तो आएगा विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा फ्यूचर टेंस में. ओके, तो चलो आगे चलते हैं. Continuous form. The continuous form shows us that the action is still happening at a given point in time and that it is not yet complete. We write a verb in the continuous form like this: verb to be plus main verb plus ing. For example, I walked to school in the past continuous tense becomes I was walking to school. In the present continuous tense, it becomes I am walking to school. And in the future continuous tense, it becomes I will be walking to school. Let us understand the difference.
in the past ing. So here students, first let's understand the definition and the identification of continuous tense. तो continuous tense किसे कह सकते हैं? The continuous form shows us, वो क्या शो करता है? continuous कोई भी continuous continuous past, continuous present और continuous future, वो फॉर्म शो करते हैं कि जो एक्शन है वो अभी भी हैपन हो रही, अभी भी ऑन गोइंग है, एंड दैट इज नॉट येट कंप्लीट, और अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुई है. वी राइट अ वर्ब इन द कंटिन्यूस फॉर्म लाइक दिस. तो कंटिन्यूस फॉर्म कैसे लिखते हैं देखते हैं. वर्ब के टू बी के फॉर्म, मतलब कि प्रेजेंट के टू बी के फॉर्म कौन कौन से है? एमिजार है, फिर पास्ट के वॉज वेर है, और फ्यूचर के विल और शैल है, और उस प्लस वर्ब के टू बी के फॉर्म्स. ओके, अगर कंटिन्यूस पास्ट है तो वॉज वेर लिखेंगे, कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब के टू बी एम आर, और फ्यूचर हो गए तो विल शैल प्लस मेन वर्ब. ओके, तो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि वी विल नॉट यूज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बट वी विल यूज मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, तो पहले क्या हुआ? टू बी के फॉर्म प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी. हमेशा मेन वर्ब के साथ ही आईएनजी का फॉर्म आएगा. ओके, सो नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, तो आई वॉक टू स्कूल. ये भी हमने देख लिया कि कैसे चेंज होता है पास्ट, सिंपल पास्ट से कंटिन्यूस पास्ट कैसे चेंज होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारा कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस पास्ट में आई वॉज वॉकिंग. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वॉज मतलब कि टू बी का फॉर्म प्लस वॉक है. वॉक मतलब फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, मेन फॉर्म प्लस आईएनजी, आई वॉज वॉकिंग, तो वो हुआ हमारा कंटिन्यूस पास्ट. देन आई एम वॉकिंग, वो हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, एंड आई विल बी वॉकिंग, वो हुआ हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस. तो यहाँ पे एक कॉमन थिंग क्या है कि कंटिन्यूस टेंस में ही आईएनजी का फॉर्म आएगा, और जब जब हम लोग आईएनजी का फॉर्म यूज करेंगे तो उसके साथ क्या आएगा? उसके साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल राइट है, तो राइट है वो हुआ हमारा फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेन फॉर्म. लिखना WRITE, राइट, दैट इज अवर मेन फॉर्म. And what is the past form of write? That is wrote. तो we will not write like I writing a letter. वैसे हम लोग कभी नहीं लिखेंगे. क्यों? Because wrote है वो past form है, और ing के साथ हमेशा present का form ही लिखते हैं. तो स्टूडेंट्स ये भी आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, पूरा चार्ट कंटिन्यूस टेंस वाला. ओके, कि कंटिन्यूस टेंस पास्ट में क्या होता है, प्रेजेंट में क्या होता है, और फ्यूचर में. ओके, नो नीड टू ड्रॉ द पिक्चर. ओके, सो लेट्स मूव. School. Here, walks, past tense. I walked to school. Here, walk is in the simple past tense. It tells us this action was completed before the current time. I was walking to school. This shows that at some point in the past, I was still doing the action of walking, and that the action continued to happen for a while. For example, while I was walking to school, I saw the puppy on the road. The action of walking did not stop when I saw the puppy. It continued. Present tense. I walked to school. Here, walk is in the simple present tense. It tells me that this action happens regularly and maybe every day. I am walking to school. This shows that this action is happening as I speak. I have not stopped walking yet. So, the present continuous tense is used for actions happening right now. Future tense. I will walk to school. The verb walk is in the simple future tense. It shows us that this action will start and end at some point in the future. I will be walking to school. It shows us that the action of walking will begin at some point in the future and continue happening for some time until something else happens.
Okay, student. So it was the differentiate between the simple tense and the continuous tense. तो continuous tense क्या होता है कि वो एक पॉइंट ऑफ, अगर पास्ट कंटिन्यू है तो पास्ट में एक पॉइंट पर ये एक्शन वो परफॉर्म हो रही थी वो इंडिकेट करने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यू यूज करते हैं. फिर प्रेजेंट कंटिन्यू अभी हो रही है वो इंडिकेट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यू यूज करते हैं. और फ्यूचर कंटिन्यू मतलब कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पर ये एक्शन परफॉर्म होने वाली है वो इंडिकेट करने के लिए वी विल यूज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ओके. So, this was the continuous form. We write it like this: verb to be plus main verb plus ing. And it shows us that the action is ongoing or that it has not yet been completed. So remember to use the correct tense when you speak or write. Let us have a look at some examples. Let's watch a movie after school. Sorry, Aisha. After school, I will be helping my father wash the dishes at home. Can you identify the continuous tense here? Yes. Yes, will be helping is the verb to help in the future continuous tense. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट गर्ल है शी वॉज आस्किंग हर कि स्कूल के बाद क्या हम लोग मूवी देखने के लिए जा सकते हैं. तो इसने क्या बोला कि स्कूल के बाद मैं अपने फादर को हेल्प करने वाली हूँ. तो वो क्या हुआ हमारा फ्यूचर टेंस. ओके. सो विल बी हेल्पिंग माई फादर वॉश द डिशेज एट होम. सो दैट इज अवर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. देन Let's try some more. Swati, do you watch movies often? Yes, I watch many movies. In fact, I'm watching a movie as we speak. Can you identify the continuous tense here? Yes, am watching is the verb to watch in the present continuous tense. Now we are all set to use this simple and continuous form of tenses to express what we want. So students, it was all about our continuous tense and as well as simple tense. So what is the difference between simple and continuous? It is very beautifully shown here. Okay, so let's move to next point. So students, here you have the exercise of continuous tense. Identify the verb in the following sentence and their tenses. So here you have to identify the tense with their verb. Okay, so Tia is revising her notes. So what is the verb here and which tense is that? Tia is revising. So here how will you identify the tense? आप लोग टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कंटिन्यूस टेंस की बात कर रही हूँ तो हम लोग उसका टू बी का जो फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब है, राइट, स्टेट ऑफ बीइंग जिसे बोलते हैं वो चेक करेंगे. तो वो क्या है यहाँ पे इज है तो वो शो करता है कि प्रेजेंट टेंस है, राइट. एम इज आर है वो प्रेजेंट टेंस के टू बी के फॉर्म है प्लस वर्ब प्लस आईएनजी है तो ये हुआ हमारा continue present tense. Then will take the medicine, they will take the medicines. तो यहाँ पे क्या हुआ will take है तो यहाँ पे ing फॉर्म नहीं है तो कौन सा टेंस हुआ? कंटिन्यूस नहीं है तो सिंपल हुआ. कौन सा सिंपल? will है तो फ्यूचर हुआ. सो दैट इज अवर सिंपल फ्यूचर. सेकेंड वन इज अवर सिंपल फ्यूचर. देन we were playing chess. तो were है वो हुआ हमारा पास्ट, राइट. तो उसके साथ आईएनजी वाला है तो कंटिन्यूस है तो वो हुआ हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस. सो लेट्स चेक द आंसर्स. यस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सिंपल फ्यूचर एंड पास्ट कंटिन्यूस. ओके, तो ये आपको आपकी फेयर बुक में लिखना है एज योर होमवर्क. जो पहले मैंने बीच में वीडियो में भी आपको जो टेबल ड्रॉ करने के लिए बोला था चार्ट वो भी आपको ड्रॉ मतलब पूरा लिखना है अपनी फेयर बुक में और मुझे एज अ होमवर्क सेंड करना है और ये भी सेंड करना है. ओके, देन अगेन यू हैव द ब्लैंक्स. filling the blanks by choosing the correct options. Can't talk, I dash right now. right now तो ऐसे जो वर्ड्स है कीवर्ड्स है कि जो हमें आइडेंटिफाई कराने के लिए
वेरी यूजफुल होते हैं। राइट नाउ मतलब अभी चल रहा है, तो कौन सा टेंस आएगा? यस, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस। सो कांट टॉक, आई एम ड्राइविंग राइट नाउ। अभी बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी ड्राइविंग कर रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट में आएगा एम ड्राइविंग, देन यू डैश was slipping were slipping when I came in, when I came in, जब मैं अंदर आई तब तुम सो रही थी। तो यू वॉज स्लिपिंग आता है या फिर यू के साथ वेर आता है? वेर आता है। सो यू वेर स्लिपिंग। देन सोनू डैश अ केक फॉर अ एनिवर्सरी। सोनू विल बी बेकिंग और विल बेकिंग, तो कंटिन्यूस में क्या आता है? बी आता है बीच में, राइट? सो विल बी बेकिंग। सो लेट्स चेक द आंसर्स। यस, आई एम ड्राइविंग, वेर स्लिपिंग एंड विल बी बेकिंग। सो ये भी आपको की नोटबुक में, फेयर बुक में, ये सब आज का सारा जो कुछ भी मैंने लिखने को बोला है वो आपको फेयर बुक में लिखना है और मुझे होमवर्क में सेंड करना है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो योर होमवर्क। देन कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस टू द टेंसेस मेंशन विद इन ब्रैकेट। तो आपको ये जो सेंटेंस दिया गया है और उसके बाद में एक ब्रैकेट में सेंटेंस दिया, मतलब टेंस दिया गया है, वो आपको इंटरचेंज करना है। शी पेंटेड अ हाउस। ओके, तो ये पहले एक सेंटेंस है हमारे पास, तो उसको आपको कौन से टेंस में ट्रांसफॉर्म करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में करना है। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस? सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट कंटिन्यू है, तो प्रेजेंट के टू बी के फॉर्म्स क्या है? एम इज आर प्लस वर्ब के का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट शी, फिर शी के साथ इज आएगा। पेंटेड, तो ये तो हुआ हमारा पास्ट फॉर्म, हमें तो यहाँ पे कंटिन्यू टेंस है, कंटिन्यू टेंस है, तो हमें तो चाहिए फर्स्ट फॉर्म। सो दैट इज अवर पेंट। शी इज पेंटिंग, पेंट के साथ आईएनजी आएगा बिकॉज दैट इज अवर कंटिन्यूस। सो शी इज पेंटिंग अ हाउस। So let's check the answer. She is painting a house. Then my sister wrote a poem. Wrote मतलब past form, simple past है। ओके, सो फ्यूचर कंटिन्यू कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? My sister will be writing a poem. Then the boy cried. सो पास्ट कंटिन्यू आईएनजी वाला आएगा। द बॉय वॉज क्राइंग। जब जब कंटिन्यू आएगा तब तक टू बी का फॉर्म आएगा। जब जब आईएनजी वाला फॉर्म आएगा तब तक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी का फॉर्म आएगा। ये सब आपको याद रखना है और ये आपको अपनी फेयर बुक में भी लिखना है and send it to me as your homework. Okay, students? Then let's move it next. So students, here we are going to end up our today's lecture. Whatever the work is provided to you, that you have to do in your fair book and send it to me as your homework. Okay, जो वीडियो बताया था उसमें से भी जो चार्ट लिखना है आपको, एक सिंपल टेंस वाला होगा, एक कंटिन्यूस वाला होगा और उसकी डेफिनेशन भी है, कंटिन्यूस की डेफिनेशन भी है, उसका आइडेंटिफिकेशन है, उसके एग्जाम्पल है, वो सब भी आपको लिखना है और मुझे सेंड करना है ऑन टाइम। Okay, so it's your homework and it's all about our today's lecture about continuous tense, continuous present tense, continuous past tense and continuous future tense. Okay, so here we are going to end up our today's lecture, and if you find any difficulty regarding this lecture, you are free to ask me. Thank you, my dear all students, and have a nice day.